भारत और भूटान के बीच संबंधों को विकसित करने के लिए रेलवे परियोजना की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि असम के कोकराझार से भूटान के गैलीफू तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 69 किलोमीटर होगी। Connecting two very important cities of Bhutan. One is Gelefu, as Foreign Secretary shared with us. This is being developed as a mindfulness city. And second is Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created.